me for always quoting my dad, but my dad used to say, Joey, a job's about a lot more than a paycheck. He really would say this. It's about a lot more than a paycheck. It's about your dignity. It's about respect. It's about being able to look your kid in the eye and say, honey, it's going to be okay, and mean it. Well, folks, so let's look at the results. We're not finished yet by any stretch of the imagination, but unemployment rate is at 3.4%, a 50-year low. A near record unemployment. Near record unemployment for black and Hispanic workers. We've already created, your help, 800,000 good-paying manufacturing jobs, the fastest growth in 40 years. And where is it written? Where is it written that America can't lead the world in manufacturing? And I don't know where that's written. For too many decades, we imported projects and exported jobs. Now, thanks to what you've all done, we're exporting American products and creating American jobs. Folks, Inflation has been a global problem because the pandemic disrupted our supply chains, and Putin's unfair and brutal war in Ukraine disrupted energy supplies as well as food supplies, blocking all that grain in Ukraine. But we're better positioned than any country on earth right now. But we have more to do. But here at home, inflation is coming down. Here at home, gas prices are down $1.50 from their peak. Food inflation is coming down, not fast enough, but coming down. Inflation has fallen every month for the last 6 months, while take-home pay has gone up. Additionally, over the last 2 years, a record 10 million Americans applied to start new businesses. 10 million. And by the way, every time someone starts a small business is an act of hope. And Madam Vice President, I want to thank you for leading that effort to ensure that small businesses have access to capital and the historic laws we enacted that are going to just come into being. Standing here last year, I shared with you a story of American genius and possibilities. Semiconductors, small computer chips the size of a fingerprint that power everything, from cell phones to automobiles and so much more. These chips were invented in America. Let's get that straight. They were invented in America. We used to make 40% of the world's chips. In the last several decades, we lost our edge. We're down to only producing 10%. We all saw what happened during the pandemic when chip factories shut down overseas. Today's automobiles need 3,000 chips, each of those automobiles. But American automobiles couldn't make enough cars because there weren't enough chips. Car prices went up. People got laid off. So did everything from refrigerators to cell phones. We can never let that happen again. That's why we came together to pass the Bipartisan Chips and Science Act. Folks, I know I've been criticized for saying this, but I'm not changing my view. We're going to make sure the supply chain for America begins in America. The supply chain begins in America. We've already created 800,000 new manufacturing jobs without this law, before the law kicks in. With this new law, we're going to create hundreds of thousands of new jobs across the country. And I mean all across the country, throughout not just the coast, but through the middle of the country as well. That's going to come from companies that have announced more than $300 billion in investment in American manufacturing over the next few years. Outside of Columbus, Ohio, Intel is building semiconductor factories on 1,000 acres, literally a field of dreams. It's going to create 10,000 jobs, that one investment, 7,000 construction jobs, 3,000 jobs in those factories once they're finished. They call them factories. Jobs paying an average of $130,000 a year.
and many do not require a college degree. Jobs. Because we work together, these jobs where people don't have to leave home to search for opportunity. And it's just getting started. Think about the new homes, the small businesses, the medium-sized businesses. So much more that's going to be needed to support those 3,000 permanent jobs and the factories that are going to be built. Talk to mayors and governors, Democrats and Republicans, and they'll tell you what this means for their communities. We're seeing these field of dreams transform to the heartland. But to maintain the strongest economy in the world, we need the best infrastructure in the world. And folks, as you all know, we used to be #1 in the world in infrastructure. We've sunk to 13th in the world. The United States of America, 13th in the world in infrastructure, modern infrastructure. But now we're coming back because we came together and passed the bipartisan infrastructure law, the largest investment in infrastructure since President Eisenhower's interstate highway system. And folks, already we've funded over 20,000 projects, including major airports from Boston to Atlanta to Portland. Projects that are going to put thousands of people to work rebuilding our highways, our bridges, our railroads, our tunnels, ports, airports, clean water, high-speed internet, all across America. Urban, rural, tribal. And folks, we're just getting started. We're just getting started. And I mean this sincerely. I want to thank my Republican friends who voted for the law, and my Republican friends who voted against it as well. But I still get asked to fund the projects in those districts as well. But don't worry. I promised I'd be a president for all Americans. We'll fund these projects. And I'll see you at the groundbreaking. Look, this law will further unite all of America. Projects like Brent Spence Bridge in Kentucky over the Ohio River, built 60 years ago, badly needed repairs, one of the nation's most congested freight routes, carrying $2 billion worth of freight every single day across the Ohio River. And folks, I've been talking about fixing it for decades, but we're really finally going to get it done. Yes. I went there last month with Democrats and Republicans, and from both states, to deliver a commitment of $1.6 billion for this project. And while I was there, I met a young woman named Sarah, who's here tonight. I don't know where Sarah is. Is she up in the box? I don't know. Sarah, how are you? Well, Sarah, for 30 years, I learned, she told me she'd been a proud member of the Iron Workers Local 44, known as the Cowboys in the Sky. The folks who built Cincinnati's skyline. Sarah said she can't wait to be 10 stories above the Ohio River building that new bridge. God bless her. That's pride. And that's what we're also building. We're building back pride. Look, we're also replacing poisonous lead pipes that go into 10 million homes in America, 400,000 school and child care centers. So every child in America can drink the water instead of having permanent damage to their brain. Look, we're making sure that every community in America has access to affordable high-speed internet. No parent should have to drive by McDonald's parking lot to help them do their homework online with their kids, which many thousands were doing across the country. And when we do these projects, and again I get criticized for this, but I make no excuses for it, we're going to buy American. We're going to buy American. Folks,
and is totally consistent with international trade rules. Buy America has been the law since 1933, but for too long, past administrations, Democrat and Republican, have fought to get around it. Not anymore. Tonight, I'm announcing new standards that require all construction materials used in federal infrastructure projects to be made in America. Made in America. I mean it. Lumber, glass, drywall, fiber optic cable. And on my watch, American roads, bridges, and American highways are going to be made with American products as well. Folks, my economic plan is about investing in places and people that have been forgotten. So many of you listening to me tonight, I know you feel it. So many of you felt like you've just simply been forgotten. Amid the economic upheaval of the past 4 decades, too many people have been left behind and treated like they're invisible. Maybe that's you watching from home. Remember the jobs that went away. You remember them, don't you? The folks at home remember them. You wonder whether the path even exists anymore for your children to get ahead without having to move away. Well, that's why I get that. That's why we're building an economy where no one's left behind. Jobs are coming back. Pride is coming back because choices we made in the last several years. You know, this is, in my view, a blue-collar blueprint to rebuild America and make a real difference in your lives at home. For example, too many of you lay in bed at night like my dad did, staring at the ceiling, wondering what in God's name happens if your spouse gets cancer, or your child gets deadly ill, or something happens to you. What are you going to have? You get money to pay for those medical bills? Or are you going to have to sell the house or try to get a second mortgage on it? I get it. I get it. With the Inflation Reduction Act that I signed into law, we're taking on powerful interests to bring health care costs down so you can sleep better at night with more security. You know, we pay more for prescription drugs than any nation in the world. Let me say it again. We pay more for prescription drugs than any major nation on earth. For example, 1 in 10 Americans has diabetes. Many of you in this chamber do, and in the audience. But every day, millions need insulin to control their diabetes so they can literally stay alive. Insulin's been around for over 100 years. The guy who invented it didn't even patent it because he wanted it to be available for everyone. It cost the drug companies roughly $10 a vial to make that insulin. Package it and all, you may get up to $13. But Big Pharma has been unfairly charging people hundreds of dollars, $400 to $500 a month, making record profits. Not anymore. Not anymore. So many things that we did are only now coming to fruition. We said we were doing this, and we said we passed the law to do it, but people didn't know because the law didn't take effect until January 1 of this year. We capped the cost of insulin at $35 a month for seniors on Medicare. People are just finding out. I'm sure you're getting the same calls I'm getting. Look, there are millions of other Americans who do not or are not on Medicare, including 200,000 young people with type 1 diabetes who need this insulin to stay alive. Let's finish the job this time. Let's cap the cost of insulin for everybody at $35. Folks, and Big Pharma is still going to do very well, I promise you all. I promise you they're going to do very well.
This law also caps and won't even go into effect until 2025. Out-of-pocket drug costs for seniors on Medicare at a maximum of $2,000 a year. You don't have to pay more than $2,000 a year, no matter how much your drug costs are. Because you know why? You all know it. Many of you, like many in my family, have cancer. You know the drugs can range from $10,000, $11,000, $14,000, $15,000 for the cancer drugs. If drug prices rise faster than inflation, drug companies are going to have to pay Medicare back the difference. We're finally giving Medicare the power to negotiate drug prices. Bringing down prescription drug costs doesn't just save seniors money, it cuts the federal deficit by billions of dollars, by hundreds of billions of dollars, because these prescription drugs are drugs purchased by Medicare to keep their commitment to the seniors. Well, guess what? Instead of paying $400 or $500 a month, you're paying $15. That's a lot of savings for the federal government. And by the way, why wouldn't we want that? Now some members here are threatening, and I know it's not an official party position, so I'm going to exaggerate, but threatening to repeal the Inflation Reduction Act. As my coach, that's okay, that's fair. As my football coach used to say, lots of luck in your senior year. Make no mistake, if you try anything to raise the cost of prescription drugs, I will veto it. Look, I'm pleased to say that more Americans have health insurance now than ever in history. A record 16 million people are enrolled in the Affordable Care Act. And thanks to the law I signed last year, saving millions are saving $800 a year on their premiums. And by the way, that law was written and the benefit expires in 2025. So my plea to some of you, at least in this audience, let's finish the job and make these savings permanent. Expand coverage of Medicaid. Look, the Inflation Reduction Act is also the most significant investment ever in climate change. Ever. Lowering utility bills, creating American jobs, leading the world to a clean energy future. I visited the devastating aftermath of record floods, droughts, storms, and wildfires from Arizona to New Mexico to all the way up to the Canadian border. More timber has been burned, as I've observed from helicopters, than the entire state of Missouri. And we don't have global warming? Not a problem. In addition to emergency recovery, from Puerto Rico to Florida to Idaho, we're rebuilding for the long term. New electric grids that are able to weather major storms and not prevent those forest fires. Roads and water systems withstand the next big flood. Clean energy to cut pollution and create jobs in communities often left behind. We're going to build 500,000 electric vehicle charging stations installed across the country by tens of thousands of IBEW workers. And we're helping families save more than $1,000 a year with tax credits to purchase electric vehicles and efficient अमेरिकी सदर जो बाइडेन स्टेट ऑफ यूनियन से खिताब थे, ये अमेरिकी सदर का दूसरा खिताब है जिसमें उनका कहना था कि हम हर बहरान से मजबूत होकर निकलेंगे। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने मिलकर बहरानों से निकाला है। अमेरिकी सदर का ये दूसरा स्टेट ऑफ यूनियन का खिताब है। मिडिल क्लास इस वक्त काम कर रहा है और काम करेगा तो अमेरिका तरक्की करेगा। हम जो करते हैं उस पर हमें फ़ख्र है। अफरात ज़र इस वक्त बड़ा मसला है। अमेरिका में गैस की कीमतों में कमी की गई है। दुनिया के किसी भी मुल्क से बेहतर पोजीशन में है। हम रोज़गार के नए मौक़े पैदा कर रहे हैं। अमेरिकी मसूआत एक्सपोर्ट कर रहे हैं और नौकरियों के मौक़े पैदा कर रहे हैं। कोरोना की वजह से महंगाई का मसला आलमी है। अभी भी बहुत कुछ करना है। महंगाई में कमी आ रही है। अमेरिका में खाने पीने की अशिया में कमी आ रही है। अमेरिका में लोगों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है।
आम खबर आपने जानी। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। देखते रहिए पोल न्यूज़। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिपचिप और सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर सनदल ब्यूटी क्रीम, ये खास है। तामीर हो रहा है पंजाब का बुलंद तरीन शाहकार सरीन टावर। स्पेशलाइज्ड अज्जा से बना डॉक्टर टूथपेस्ट, इलाज भी और बचाव भी। MGC Jewel Project in Bahria Town, Rawalpindi, Islamabad. स्किन हेल्दी और चेहरे पे ग्लो। अजूबा गोल्ड एंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, सनदल ब्यूटी क्रीम, ये खास है। MGC Jewel Project in Bahria Town, Rawalpindi, Islamabad. स्पेशलाइज्ड अज्जा से बना डॉक्टर टूथपेस्ट, इलाज भी और बचाव भी। स्किन हेल्दी और चेहरे पे ग्लो। अजूबा गोल्ड एंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। तामीर हो रहा है पंजाब का बुलंद तरीन शाहकार सरीन टावर। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क की जो माशी सूरत हाल है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। एक तरफ मुल्क पर दिवालिया होने की तलवार लटक रही है और दूसरी जानिब IMF की जो कड़ी शराइत हैं मुश्किलात का तूफान लेकर आ रही हैं। IMF ने मुज़ाकरात के दौरान सख्त तरीन मुतालिबात की फहरिस्त पाकिस्तान के हवाले कर दी है। मईशत के चैंपियन इसहाक डार साहब IMF के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। इसहाक डार साहब इन दिनों IMF से वही प्रोग्राम शुरू करने की मिन्नतें कर रहे हैं जिसको पिछले साल सितंबर में लात मारी थी। IMF चाहता था कि डॉलर मसनूई तौर पर ना रोका जाए, मगर इसहाक डार साहब अड़े रहे कि डॉलर 200 रुपए से नीचे लाकर रहेंगे। और माहिर मैशत हफीज़ पाशा साहब ने कहा है कि जी IMF प्रोग्राम जारी रहता तो 2 से 2.5 अरब डॉलर का वो नुकसान ना होता जो डॉलर को मसनूई काबू करने से हुआ है। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कुछ कहा है। वो कहते हैं कि जी मुल्क का दूसरा बड़ा नुकसान ये था कि 1.5 अरब डॉलर तरसीलाते ज़र जो है ब्लैक मार्केट में चली गई, जहाँ डॉलर का जो रेट है सरकारी रेट से ज़्यादा था। और तीसरा नुकसान ये था कि जी ताजिर मजीद 1.5 अरब डॉलर मुल्क में ना लाए क्योंकि एलसीज खुलना बंद हो चुकी थी, यानी इंपोर्ट के लिए जो डॉलर है मौजूद ही नहीं थे। अच्छा, इसहाक डार साहब तारीख दौर में भी मईशत इस नहज पर आ गई है कि जी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनसे डॉलर देने के लिए बाकायदा जो खैराती इदारे हैं उनका सहारा लिया जा रहा है। सैलानी, अखुवत और जो TCF समेत 5 से 6 खैराती इदारे हैं समंदर पार पाकिस्तानियों को जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत 2 अरब डॉलर देने पर आमादा करेंगे और वो भी 5 साल के लिए बगैर किसी सूद पर। अब जाहिर है कि मौजूदा हुकूमत की तो ऐसी साख नहीं है कि ये रकम जो समंदर पार पाकिस्तानी है उनसे तलब कर सकें। और इसहाक डार साहब ने जो खैराती इदारे हैं उनको मरकजी बैंक के साथ जो बैठकर कह दें कि तरीकाकार बनाने की हिदायत तक भी कर दी है। अब डॉलर ना होने के सबब मुल्क में जो दरामदात हैं वो रुकी हुई हैं। डॉलर रोज़ इजाफे के नए रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है और सितंबर से रुके जो IMF प्रोग्राम है उस पर भी मुज़ाकरात अभी तक जारी हैं जिसकी कामयाबी डॉलर बहरान ख़त्म कर सकती है। अब इत्तेहादी जो हुकूमत कह लें, इनकी नाअहली कह लें, जिसने मुल्क को इस अंधेरे में धकेल दिया है जहाँ से निकलना शायद बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF जो जायज़ा मिशन के दरमियान टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद अहम फैसला साजी के लिए पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी शुरू हो गए हैं। ज़रा सुनिएगा अब इसमें क्या जी टैक्स रेवेन्यू, माली खसारा और जो तवानाई का शोबा है उसमें इस्लाहात का जायज़ा लिया जा रहा है। जबकि जो बजट खसारा है, बैरूनी फाइनेंसिंग और जो कह लें कि बजट फ्रेमवर्क है उस समय जो आम अमूर हैं उन पर पॉलिसी साजी को हतमी शक्ल देने पर इतफाक़ भी किया जाएगा। FPR ने रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा 7,470 अरब रुपए का जो टैक्स हदफ है वो हर सूरत हासिल करने की यकीन दहानी भी करवाई है। और IMF ने सब्सिडी कम करने के लिए बिजली और गैस की जो रेट है बढ़ाने पर जोर भी दिया है। हुकूमत और IMF के दरमियान जारी जो मुज़ाकरात हैं उनकी मुद्दत खत्म होने में 3 दिन बाकी हैं, जबकि फरीकैन जो हैं अभी तक इख्तलाफात तय नहीं कर सके हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने बिजली के टैरिफ इजाफे के लिए हुकूमती टीम को इजाज़त भी दे दी और IMF ये चाहता है कि बिजली के टैरिफ में 50% इजाफा किया जाए, जबकि हुकूमत 20 से 33% बढ़ाने पर आमादा नजर आती है। ज़रा एक और बात बताते हैं कि जी
जो बुनियादी टैरिफ है उसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि औसतन 7.74 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा हो सकता है, और जो ऊपर का स्लैब है उसका इजाफा जो है वो इससे समझ लें कि कहीं ज़्यादा होगा। इन तमाम मामलों पर बात करने के मेरे साथ मौजूद है माहिर माशियात साहब मुज़म्मिल असलम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब ज्वाइन करने के लिए। मुज़म्मिल साहब, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो कर्ज़ है वो इस वक्त फ़र्ज हो गया और कोई जो ऑप्शन है वो बची नहीं है, और ये बात हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर वो टीम जानती है जो IMF के वफ्त में शामिल है। तो अब ऐसे हालात में मुज़म्मिल साहब हमारी जो माशी टीम है वो कैसे IMF वफ्त को आमादा करेगी? देखें, IMF के वफ्त को वो किस तरह आमादा किस मुंह से करेंगे मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसहाक डार को हटा के जो है बाकी टीम तो वही है जो मिफ्ता इस्माइल IMF के पास लेके गए थे, और 29 अगस्त को जो है उन्होंने IMF के साथ एक नया प्रोग्राम, फिजा मैं आपको ये थ्रू आज ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमारा प्रोग्राम सितंबर में खत्म हो जाना था। मिफ्ता इस्माइल ने IMF के साथ एक नया प्रोग्राम सख्त शराइत के साथ तहरीर किया था। ये जो मरियम नवाज कल से लगी हुई है ना, 2 दिन से घूम रही हैं कि ये हमारा नहीं प्रोग्राम, ये IMF का प्रोग्राम, ये इमरान खान का प्रोग्राम है, इमरान खान ने फाड़ दिया था जाते हुए, अब हम उस पर अमल कर रहे हैं, महंगाई उसकी वजह से हो रही है। ये झूठ है, ये बकवास है। ये मिफ्ता इस्माइल ने प्रोग्राम को 9 महीने के लिए उसकी जो है ड्यूरेशन बढ़वाई, और उसके बाद उसने नया प्रोग्राम तहरीर किया जिसमें उसने अपने टारगेट्स दिए, और आज उस टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रहे, और IMF कह रहा है कि बच्चों ये टारगेट्स पूरे करो या छुट्टी करो। और अब वो पहले इसहाक डार, फिर उसके बाद लेकर आगे वो आए थे मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन का माहौल बनाने। अब वो इलेक्शन का ऐसा माहौल बनाया कि मुस्लिम लीग नून ही भाग गई है और जो है इधर उधर लेफ्ट राइट हो रही है। और वो उसके बाद जैसे अभी आपने खुद बता दिया 200 का डॉलर करना था, आजकल मुंह से डॉलर का नाम ही नहीं निकल रहा। लोगों ने तो इनका निकनेम रखा हुआ था इसहाक डॉलर, ठीक है ना। तो अब मुंह से डॉलर का नाम ही नहीं निकल रहा, और आजकल जो है बिल्कुल छुपे हुए, मैंने सुना है कि वो बोल रहा हूँ अपने दफ्तर से भी जब निकलते हैं ना तो उनको गार्डों का एक 16 गार्ड जो है उनको घेरे में लेते हैं ताकि कोई रिपोर्टर भी उनसे सवाल ना कर सके। ये पोजीशन आ गई है उनकी इस वक्त। तो वो जो है अभी वो IMF की मिन्नतें भी तरले भी कर लिया उन्होंने, लेकिन IMF उनकी बात ही नहीं मान रहा। वो कह रहे ये करो, ये चीजें ये करोगे तो आगे चलेंगे, वरना बैठे। अच्छा, तो हम भी आगे चलते हैं मुज़म्मिल साहब, लेकिन ये ज़रा बताइएगा, अब ये जो IMF ने जो मुतालिबा किया, जो ज़राए से मसूल होने वाली इतलात हैं, मुतालिबा ये कि जी बिजली की जो कीमत है उसमें तो 50% इजाफा किया जाए, सब्सिडी ख़त्म की जाए। तो अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है मुज़म्मिल साहब, तो मेरे ज़हन में तो ये आ रहा है कि जो बेचारा आम आदमी है जो अभी इतना परेशान है महंगाई को देख कर, आपको भी रोज़ ऐसे लोग मिलते होंगे, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा मिलते होंगे, हमें भी मिलते हैं कि जी आप लोग प्रोग्राम करते हैं, आप लोगों के पास क्या खबर है, महंगाई कम होगी नहीं होगी। आप चूँकि माहिर मईशत हैं, आपसे तो बहुत से सवाल पूछते होंगे। तो आम आदमी जो अभी बोझ नहीं उठा पा रहा है, अगर मजीद महंगा होता है तो उस बेचारे में कैसे ताकत बचेगी, क्या होगा? देखें, एक तो आप लोगों ने आम आदमी को बोल के जो है ना आधा पाकिस्तान वैसे ही जो है निकाल देते हैं हर चीज से। ये आम नहीं, हर खास वो आम को इसमें फर्क पड़ेगा। आम आदमी को चले बिजली के बिल में फर्क पड़ गया, मेरे घर पे बिजली का बिल आएगा, मुझे भी फर्क पड़ गया। लेकिन जहां हम काम करते हैं, अगर उनका बिजली का बिल 3 गुना 4 गुना हो गया और उनके कारोबार जो है वो मुनाफा उनका खत्म हो गया, तो वो अपने कारोबार बंद कर देंगे। चले वहां से अगर हमें रोजगार आ रहा था तो हम जो है ऊपर नीचे करके बिजली के बिल भर रहे थे। एक तो ये हमें डायरेक्ट हिट पड़ेगी, और उसके बाद इनडायरेक्ट हिट पड़ेगी जो आम आदमी नहीं, ये पूरा पाकिस्तान आप देखिएगा तो सही। मैं तो अभी ट्विटर और इधर उधर यही सुन रहा हूँ कि ताजिर लोग बार बार बोल रहे हैं कि आप जो है होश के नाखुन लें, बिजली गैस के बिल सोच समझ के बढ़ाइएगा। देखें बिजली का बिल क्यों बढ़ रहा है, आलमी मार्केट में तो तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं, इसलिए बढ़ रहा है कि जो बिलों की कलेक्शन 95% होती थी वो 82% रह गई। अब बिल ही नहीं वसूल कर रहे जाके। अब IMF कह रहे हैं आपका खसारा उसकी वजह से बढ़ गया। अब इसमें मेरा आपका क्या कसूर है? अगर लोग बिल नहीं दे रहे हैं, ये उनसे जाके नहीं ले रहे, अब उनकी भी कसूर जो है हम पे डाल दिया जाएगा मुद्दा, और हमसे बिजली का बिल ज्यादा दिया जाएगा। तो कोई इंतहा होती है नालायकी की जी। और एक तो आपने IMF के साथ प्रोग्राम में जो है लेट करके मुल्क को वहां पहुंचा दिया कि अब उसके बाद आप IMF को कह रहे हैं कुछ भी लिखवा लो हमसे। अब अल्लाह खैर करे, ये जो है टेक्निकल कभी कहते हैं मुज़ाकरात चल रहे हैं, कभी कहते हैं खत्म हो गए, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। इंतजार करते हैं कि फाइनल पर्चा क्या आता है हाथ में।
फिर उस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन ये आपको मैं बात ठीक है। शर्तिया बोल दूं कि ये जो है लोगों की गाड़ी नहीं चलनी है जो IMF के साथ जो तय होना है। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये जो तजर्बेकार हुकूमत है, इसकी तजर्बेकारी ने पाकिस्तान को दिवालिया करके रख दिया है, और बल्कि आप जैसे जो माहिर मईशत हैं वो आके बताते हैं बाकायदा कि जी डिफ़ॉल्ट मुल्क हो चुका है, खुदा न खास्ता ऐलान होना बाकी है। तो अब ये जो इस हुकूमत की जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में कोई साख भी नहीं है, तो खैराती इदारों से जो रब्ता किया गया, मदद मांगी गई है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत इस सतह पर आ गई कि उसे खैराती इदारे डॉलर इकट्ठे करके देंगे। अब देखें, बात